Hi everyone and welcome back to my channel. Okay, so first of all, thank you so much for sticking around. I know I haven't been uploading videos consistently on YouTube. That's because life has been very hectic lately. I'm just focusing on my health right now. Like that is my number one priority. I had some minor health issues, so I have been going to the gym regularly and eating clean almost. So yeah, I was taking one step at a time. So yeah, now I'm back and I will be posting consistently, I promise. Today I'm back with a new video which is a Savannah haul, and you guys have been asking me to do a summary dress haul or like just basic summary outfits. So yeah, I ordered a bunch of stuff from Savannah. So without wasting any time, let's get started. So this is the first time I'm making a Savannah haul on my YouTube channel. So yeah, let me know if you guys like it or if you guys want more of these in the future. Okay, so the first dress that I ordered was this tube dress that I'm wearing right now. So this is how this dress looks like. It's really flattering first of all, and like you get these straps, so it looks like a halter neck kind of a dress, but obviously you can tie them up in a different way also, but I liked it like this, like a halter neck situation. I think it looks really good. And also this dress is giving me major Ibiza summer kind of a vibe, like uh, yeah, I don't know how to explain it, but yeah, I will show you some pictures. Like about the quality, I really like the quality of this dress, but the only issue I noticed is that it's a little bit see-through, like not too much, but it's a little bit see-through, so obviously you will have to wear shorts or something underneath this dress. And also guys, I ordered this in size M because that was the biggest size they had, right? So I ordered size M, and like this dress is a bit too short for me, but still I really like it. I think this is perfect for a girls night out and sort of stuff. And yeah, एंड ऑल्सो दिस ड्रेस लुक्स लाइक अ सीक्वेंस ड्रेस, बट इसका एक्चुअल में ना वैसा वाला सीक्वेंस नहीं है. लाइक इस पे ना ऐसे छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट स्टिकर काइंड ऑफ कुछ ऐसा है, बट दिस इज़ नॉट सीक्वेंस ड्रेस, बट दूर से देखने में लाइक इट लुक्स लाइक अ सीक्वेंस ड्रेस. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, I love the color, I love the flower design and everything. I just think it is like too perfect. And also this dress has like a zip in the back, so like आपको पहनने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि this dress is not very stretchable. So yeah, keep that in mind. I think अगर L size उनके पास होता तो मैं वही ऑर्डर करती, but they didn't have that, unfortunately. Maybe I have to lose some weight to fit into this dress. Maybe that's my motivation. But anyways, yeah, like I really like this dress. Dress looks exactly like my Pinterest board, which I saved, like Ibiza summer vibes and all. This dress looks exactly like that, and this dress is for 1701 rupees, but मेरे को कूपन ऑफर वगैरह लगा के मुझे मिला है 1428 का. So yeah, I mean, I know it's a bit expensive if we compare it to other, like my previous hauls. Like this haul is like bit expensive, I mean, but it is Savannah, तो Savannah पे तो like इतना ही होता है price mostly. But yeah, you guys can also use coupons and all, और उसमें थोड़ा तो off हो ही जाएगा. Yeah, I'm in love with this dress and I love this so much, but my mom hates it because it's like a bit too short, and like it's but I have a pear shaped body, right? So ये ड्रेस अगर इसमें जिप नहीं होती तो आई डोंट थिंक सो आई कुड फिट इनटू दिस ड्रेस. इसमें जिप थी, सो लाइक आई मैनेज्ड. Like I didn't struggle to put on this dress because of the zip. It really helps. And also guys, I already told you that this fabric is not at all stretchable, so keep that in mind and order
योर साइज अकॉर्डिंग टू दैट, बट आई रियली विश कि इसमें और भी साइजेस होते, लाइक सिर्फ एम तक उन्होंने साइज दिया, विच इज़ लाइक अनएक्सेप्टेबल. एवरीवन डिजर्व्स टू वेयर लाइक द क्लोथ्स दे लाइक, एंड इसमें ना मतलब अगर आपके पास साइज ऑप्शन नहीं होता ना, दैट इज़ लाइक रियली रियली डिसअपॉइंटिंग. ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है. लाइक आई हैव सीन such cute dresses and very trendy tops or everything, but उसमें ना मेरा size ही नहीं होता, and then I get disappointed and like it's really really terrible. But anyways, I will give this dress a 8 out of a 10, and let's move on to the next one. So the next dress that I ordered is called a lettuce trim tube dress. So इसमें ना बहुत सारे color options थे, but you guys know me, I really like this butter yellow color, which is like the color of the season, like it was last year, I don't know. Anyways, I really like this color, even if it's not the color of the season or anything, I still really really like this color. So मतलब ये ड्रेस बिल्कुल ऐसा ट्यूब टॉप है बिल्कुल, एंड दिस इज़ लाइक वेरी वेरी बेसिक, बट इसके नीचे ना ये जो डिज़ाइन है, आई रियली रियली लाइक दिस, एंड दिस ड्रेस इज़ ऑल्सो गिविंग मी लाइक very summery vacation type of vibes. So that's what this haul is all about. Like I love, I'm in love with this whole vibe right now. I really like it. It is like so girly and so Pinteresty. इस ड्रेस में भी मैंने एक इशू नोटिस किया, which is again the see through, but इस ड्रेस में मतलब थोड़ा सा ज़्यादा सी थ्रू है इस वाले से. That is the thing that I really really hate when dresses or माई आउटफिट्स आर सी थ्रू. लाइक फिर उस पूरा फिगर आउट करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या पहनना है, इसके अंदर ये वाले शॉर्ट्स पहने हैं, ये एंड दैट इज़ लाइक सो स्ट्रेसफुल. लाइक प्लीज़ लेट अ गर्ल लिव. So yeah, I really like this dress. Like it matches my bed sheet right now, and like it looks, the color, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट बॉट दिस बिकॉज ऑफ द कलर, एंड जो ये नीचे ऐसा फ्रिली काइंड ऑफ डिज़ाइन है, इसका फैब्रिक भी लाइक इतना कुछ खास नहीं है. लाइक इट्स ओकेश, आई मीन इट्स स्टिल बेटर देन द मीशो ड्रेसेस क्वालिटी, बट इतना कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा रफ रफ सा ही इसका मटेरियल है. और ये ड्रेस थी 756 रुपीज़ की, और मुझे ऑफर में मिली है 634 की, which is like still it's affordable, but it's in between. So yeah, I really like this dress, but again you guys have to figure out इसके अंदर से shorts पहननी पड़ेगी because of the see through part. I just really want to go on a vacation so that I can wear all my dresses and click some cute pics and videos. Let me know if you guys want a vlog too. Anyways, if you guys still like this dress, you can totally go for it, but keep in mind कि ये see through है. So yeah, I will give this dress a 7 out of a 10. And again इस dress में भी M तक ही size था, so I ordered the size M, but ये इतना struggle नहीं हुआ मुझे पहनने में. Like this material is a bit stretchable, so still if you are a L, you guys can still order the M one. I think आप लोगों को वो आ जाएगा. So yeah. Okay, so the next dress that I ordered was this draped A-line dress. So इस dress में एक ही color है, and this dress also they have like M तक की size है इसका भी. मतलब सवाना पे ना ऐसे मोस्टली जो ऐसे क्यूट क्यूट ड्रेसेस होंगी ना, उसके मतलब S एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल और मीडियम तक की साइज़ होते हैं, उसके ऊपर होते ही नहीं है मोस्टली, मैंने ये नोटिस किया है. ओके, सो मूविंग ऑन, दिस इज़ व्हाट द ड्रेस लुक्स लाइक. इट्स अगेन वेरी वेरी समरी. आई थिंक आप लोगों ने मेरे को पहने हुए देखा होगा मेरी किसी वीडियो में, आई थिंक मैंने पहना था ये. सो या, दिस इज़ हाउ द ड्रेस लुक्स लाइक. इसका प्रिंट बहुत ही क्यूट है, लाइक ऐसा पूरा फ्लावर बने हैं, बहुत ही फ्लोरल और बहुत ही क्यूट पिंटरेस्टी वाइब दे रहा है मुझे ये. एंड लाइक इट्स वेरी वेरी समरी, वेरी गर्ली कोडेड, वेरी गर्ल कोडेड. एंड इसमें ना आगे ऐसे लेस टाइप है, और ये अगेन बो थिंगी है, ठीक है. एंड इन द बैक इट्स लाइक अ कॉर्सेट ऑलमोस्ट. अगर आप लोगों को ये लूज भी आएगी तो यू गाइस कैन स्टिल आपके पास ऑप्शन है टाइट करने का. सो आई रियली रियली लाइक दैट. एंड अनदर थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस ड्रेस कि इसमें अंदर भी बिल्कुल ऐसा एक और वो दिया है क्लोथ. सो मतलब ये सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, विच आई रियली रियली लाइक.
और इसमें भी ना साइड में आपको जिप मिलेगी, सो आपको लाइक पहनने में इतना स्ट्रगल नहीं होगा. आई रियली रियली लाइक दिस ड्रेस एंड टू माई सरप्राइज आई ऑर्डर्ड साइज M, राइट, बिकॉज दैट वॉज द बिगेस्ट साइज दे हैड. बट मेरे को वो लूज आया. कैन यू गाइज can you guys believe that मेरे को M size was loose? I think the gym is working obviously, and so then I had to exchange and I ordered size S. So this is size S, guys. I'm a size S now. Like it's not a flex, but still. And this dress is also short, but not too short, like it's okayish. And I really really like this dress. And yeah, if you are into these floral prints, you should definitely go for this dress. And also if you are a pear shaped curly like me, this dress will really really suit you, because pear shaped body pe na A line dresses, like they look so flattering. So yeah, that's why I really really like this dress. And talking about the price of this dress is for 1521, और मेरे को ये मिली थी 1397 की. सो या आई थिंक मेरे को ये ड्रेस काफ़ी पसंद आई, सो उसके हिसाब से आई थिंक प्राइस ठीक ही है. आई मीन दिस इज़ गर्ल मैथ. So yeah, I will give this dress a 10 out of 10, and you guys can obviously definitely go for this dress. Then I ordered a printed cord set. Yeah, I mean इस हॉल में सब कुछ ही मैंने ऑर्डर कर दिया. ड्रेसेस, कॉर्ड सेट, टॉप, स्कर्ट, एवरीथिंग आई ऑर्डर्ड, जो भी मेरा उस Pinterest पोर्ट से मैच हो रहा था, समर वेकेशन टाइप्स. एंड या सो ये वाला कॉर्ड सेट भी ना आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है. लाइक ओके, सो दिस इज़ द टॉप, एज यू गाइस कैन सी. लाइक ये प्रिंट तो आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड में है. लाइक इट लुक्स सो गुड ऑन बीचेस एंड स्टिकेशंस एंड स्टाफ. और इसमें भी ऐसा फ्लावर वाला ही सेम प्रिंट है. और इसके साथ ये स्कर्ट है विच इज़ लाइक प्लेन रेड स्कर्ट. एंड इसके स्कर्ट में ना नीचे ऐसा थोड़ा ऐसा अलग सा डिज़ाइन है, विच आई विल शो यू गाइज इन द पिक्चर और वीडियो. सो या इस कॉर्ड सेट की भी क्वालिटी लाइक मुझे कुछ खास नहीं लगी. लाइक ओकेश है, मतलब प्राइस के हिसाब से मुझे कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ खास नहीं लगा. स्कर्ट तो मुझे ठीक आ गई, बट इसका थोड़ा सा टॉप मुझे ऊपर से लूज़ है. दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट हैपन्स विद पेयर शेप्ड कर्ली, लाइक विद पेयर शेप्ड बॉडीज़. लाइक आपको ना मतलब कॉर्ड सेट तो कभी मिल ही नहीं सकता. आई मीन क्योंकि उसमें टॉप और स्कर्ट का अलग अलग साइज़ आप चूज़ नहीं कर सकते हो, आपको एक ही चूज़ करना पड़ेगा. यहाँ तो फिर आपकी टॉप लूज़ होगी, यहाँ तो फिर आपके बॉटम्स लूज़ होंगे उसमें. मतलब कुछ तो ऐसा होगा ही. मतलब आज तक मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मुझे कोई कॉर्ड सेट ऐसा मिला हो जो बिल्कुल परफेक्टली फिट आ रहा है मुझे, टॉप भी और बॉटम भी. एनीवेज, एंड दिस मटेरियल इज़ स्ट्रेचेबल ओनली, सो दे हैव लाइक साइज टिल L, तो मतलब आपको आराम से आ ही जाएगा वाला साइज़. एनीवेज, दिस इज़ फॉर 1290 और मुझे ये पड़ा 1085 का, विच इज़ नॉट बैड, बट आई एक्सपेक्टेड बेटर क्वालिटी फ्रॉम सवाना. लाइक मीशो का तो चलो ठीक है, मतलब आई नो उस पर बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें मिलती हैं एंड ऑल, बट स्टिल मीशो स्टिल सरप्राइजेस मी समटाइम्स. बट सवाना से तो मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे ऐसी क्वालिटी मिलेगी. मतलब ये मीशो टाइप की क्वालिटी है. और सी गाइस, दिस इज़ लाइक सी थ्रू, सो आई डोंट लाइक दैट. ठीक है, और जो इसका स्कर्ट है दैट इज़ रेड कलर, तो उसमें तो इतना सी थ्रू होगा भी तो भी नहीं दिखेगा. बट जब ये ऐसे लाइट कलर्स होते हैं ना, लाइक आई हेट दैट सीरियसली. सो आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस कॉर्ड सेट. आई मीन आई लाइक द कलर्स, आई लाइक द पैटर्न एंड एवरीथिंग, बट I don't know if it looks good on me, so I might return this. If you guys like it, you guys can go for it, but remember, keep that in mind कि see-through है and also quality is not that great. But still, if you guys want it, really want it, I mean that's your choice. Who am I to stop you? और इस कॉर्ड सेट को मैं दूंगी 6 out of 10 for obvious reasons. ओके, सो नेक्स्ट अगेन आई ऑर्डर्ड अ ए लाइन ड्रेस. और ये ड्रेस ना मतलब आई थिंक few years ago this dress was like really trending. Like ये corset type of dresses, I think Kylie Jenner wore something like
this dress, or I don't remember correctly, but this time pe I really wanted to get this dress, but I don't know, for some reason I didn't, but now I did. So yeah, I ordered this A-line dress, and I think ये ड्रेस भी आप लोगों ने मुझे पहने हुए देखा होगा. So this is the dress, and first of all let me tell you guys, तो ये पिक्चर में इन्होंने दिखाया है कि ये कॉर्सेट जैसी ड्रेस दिखाई है, ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है. इसके साथ ही ये बिल्कुल अटैच है. और लुक एट द साइज यू गाइस, आई ऑर्डर्ड साइज M, एंड ये इतना ज़्यादा लूज़ है मुझे यहाँ से, लाइक पूरा चेस्ट एरिया से तो इतना ज़्यादा ही लूज़ है. तो आई थिंक आई विल हैव टू गेट दिस ऑल्टर्ड. एंड या आई रियली हेट दैट अबाउट दिस ड्रेस कि इसका ये पार्ट मतलब मेरे को फिट नहीं आया, क्योंकि मैंने छोटा साइज़ ऑर्डर किया था, फिर भी मुझे ये लूज़ आया है. एंड इसमें ऐसे पहले से ही पैडिंग है, सो स्टिल बट आई कांट वेयर दिस ड्रेस विदाउट लाइक एनी सपोर्ट. इस पर तो डिपेंड नहीं रह सकती मैं फॉर ऑब्वियस रीजंस. एंड आई रियली लाइक द स्लीव्स, लाइक स्लीव बाकी सब बिल्कुल सेम है, पिक्चर की जैसे ही है, बिल्कुल जैसा पिक्चर में दिखाया. बट ओनली दिस कॉर्सेट पार्ट ना, ये बिल्कुल भी कॉर्सेट जैसा नहीं है. अगर इसमें ये लोग पीछे कुछ ऐसा टाइट करने के लिए दे देते, then still it would look like a corset dress, but they didn't. And I think this dress was obviously designed by man, and इसके पीछे ना जिप दी हुई है. So yeah, और I don't know why इसमें ये डिज़ाइन है, which doesn't make any sense to me. Let me know in the comments कि if this makes any sense to you, like why would this be there in the back of a dress. मतलब इसका कुछ सेंस बनता है, आप मुझे बताओ. और फोटो में ये उन्होंने बताया नहीं है कि ऐसा होगा पीछे से. सो एनीवेज आई स्टिल केप्ट दिस ड्रेस. आई डोंट नो व्हाई I didn't return it. I still kept this dress. I think I will get this altered so that it will maybe work for me. Or yeah, other than that, I found this dress really really cute. For I don't know where I will wear this dress to be honest, but बस ऐसे ही ले ली मैंने, बस पड़ी हुई है. सिर्फ एक बार मैंने ये वीडियो में पहनी है एंड दैट्स इट. क्वालिटी भी ठीक ठीक ही है, मतलब इट्स ओके, इट्स नॉट दैट सी थ्रू, सो आई थिंक इट्स फाइन. ये ड्रेस है 1640 की और मुझे पड़ी है 1432 की. सो आई थिंक इट्स फाइन. एंड अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस के हिसाब से तो मुझे ये इतनी कुछ खास नहीं लगी है. यू लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइज अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी. आई थिंक मैंने अपने लास्ट ज्वेलरी हॉल वीडियो में ही पहना था ये ड्रेस. सो yeah, I don't know, I'm not a big fan of this dress. So yeah, if you guys like it, I mean, I will suggest you to go a size smaller, maybe 2 sizes smaller, if they have if they still have that. Personally मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी लगी. I will rate this dress a 5 out of a 10. Yeah, but इस dress में they have like sizes up to 2XL, which doesn't really make any sense because ये पहले इतनी ज़्यादा लूज़ है, मतलब क्या करेगा कोई इस ड्रेस का, और ऊपर से ये बिल्कुल पिक्चर जैसी है भी नहीं. So yeah, in this haul video is turning into a rant about this dress, how much I hate it. But anyways, let's move on. So next I ordered this long pink floral dress, and this is how it looks like. Again, I ordered this in size L, and also it fits me perfectly. I mean, the material is stretchable kind of, so yeah, it fits me perfectly. And they have this mesh kind of material all over the dress, and also इसके अंदर इन्होंने अलग से वो मटेरियल दिया हुआ है. सो या, इट्स आई वुड से इट्स नॉट दैट मच सी थ्रू, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट सी थ्रू, सो आई थिंक दैट works for me. Also I really like the
स्लीव्स इसकी ऐसे बहुत ही फ्लोई काइंड ऑफ स्लीव्स हैं विच आई रियली रियली लाइक। सामने इन्होंने ऐसा बिल्कुल 3D रोज वाला डिज़ाइन बनाया है विच लुक्स वेरी वेरी प्रिटी टू बी ऑनेस्ट। एंड ओवरऑल इट्स जस्ट अ वेरी गर्ली वेरी समरी काइंड ऑफ अ ड्रेस आई फील लाइक। एंड ऑल्सो this dress looks exactly like the picture, but for some reason when I tried this dress, like the square neckline, I didn't really like that much. I'm not sure because of the neckline. Other than that, the dress is really really good. The material is so soft and so good, and if you guys are into this kind of dress, I feel like you guys will love this one. I especially love this color, the baby pink color, but for some reason when I tried this on, I don't know, uh, you tell me guys if this color suits me or not. I'm usually a person who likes to wear like dark clothes, so I don't know. This dress is for 1290 and I got it for 1099, which is okay. I feel like according to the material and according to the quality, I feel like that is okay, and I will rate this dress a 8 out of a 10. Then I ordered this ruffle tank dress, and this is how I received it. I mean, it looks exactly like the picture again, and I just love this color. Like, the color is like off-white kind of, and I love these ruffle design mostly. Like, it's giving very summery vacation vibes to me. And also ये backless है, मतलब it's not that deep backless, but it's a bit backless. So if you are going on a vacation or just going to the beach, you guys can definitely wear this dress. This is like so cute and like so summer coded, I feel like. And I got this in size L. You get like these strappy things to tie it like as a back में, and also you get a zip in the back which is really really helpful. And also guys, just keep in mind कि इसका जो inner material उन्होंने दिया है, that is like above the knees, it's not long. So yeah, just keep that in mind. I really like this dress. I feel like it fits me perfectly, and also I really like the quality too. But guys, make sure you guys order the right size because this is not stretchable. So yeah, just keep that in mind. Other than that, I really really love this dress. This is like perfect for vacation. This is for 1490 and I got it for 1269. So yeah, I feel like it's a bit expensive, but yeah, I really like it, so I feel like it's okay. So next I ordered this sequin skirt which is like viral, which is like trending from last I think years, 2-3 years I feel like. And this is how it looks like. It's like so shiny and so blingy. I just love this skirt में ना ऐसा sequins वाला material है, also like you get these big sequins too. This is just perfect for like vacation, especially if you are going out for a dinner or a girls night or something. So that's why I really really like this skirt. It's a bit long I feel like, because I ordered size L and this is a bit loose to be honest. Like इसका ये elastic कुछ ज़्यादा ही loose है मुझे, like it's quite stretchable. So yeah, I feel like मुझे एक size छोटा लेना चाहिए था, but yeah, I feel like this is just perfect. And also they didn't have any other colors in this one, so yeah, silver ही था सवाना पे. And this is for 990 rupees and I got it for 888, which is not bad to be honest. And I just love this one. It's like also the material is kind of stretchy, so you guys can maybe go a size down when you are ordering this skirt. But one thing I noticed is that when I was trying on this skirt, इसके जो ये बड़े बड़े वाले sequins है ना, 4-5 तो तभी गिर गए ये. So I feel like इसके sequins like उन्होंने अच्छे से नहीं लगाए हैं और सिर्फ try करने में ही इतने निकल गए. So yeah, keep that in mind. Other than that, sequence thing, I really really like this skirt and I will give this skirt a 9 out of a 10. Okay, so next I got this halter neck top and this is how it looks like. It's a very cute summery vacation kind of a top. And there's a starfish kind of a
DL, which is like so summer coded and which is like trending right now. So yeah, also they have like mesh material. The chest area is covered, other than that it's like all mesh material, so you guys can just tie it like this or however you like. And I really love this material, it's like very soft. I ordered this in size L and this is for 690 and I got it for 590, which is not that bad to be honest. And they also have a white and a pink kind of color, but I like this butter yellow color, so that's why I got this one. And again, you guys can definitely go for this one. The material is very soft and I really like this one, and I will rate this a 9 out of 10. I ordered this draped halter neck top again, and this is how it looks like. I mean, I'm literally wearing the same color right now, and this has like this gold thingy in the halter neck, which I really liked. And I feel like if I accessorize gold jewelry with this one, it will look really good. And to be honest, like nowadays I'm really obsessed with halter neck tops for some reason, and the material of this top is like again so soft and so nice. Again, I ordered this in size L and this is for 590 rupees and I got it for 502, which is not that bad. And they also have few more color options if you are not into this one, and I feel like this is such a good piece. And also this kind of tops and dresses are really trending right now, so yeah, I will rate this a 9 out of a 10 again. For the last one, I again ordered a sheer halter neck top, and I ordered this one in black. They only had black first of all. So this is how it looks like. It's like sheer, only the chest area is covered, other than that it's completely sheer material. And I really like this one too. I don't think I have anything like this in my collection. And again, the material is nice. It's not best, it's not that great, but it's okay, I feel like. And again, I ordered this in size L and this is for 690. I got it for 617, which is a bit expensive I feel like for this kind of top. But again, I wanted something like this for like so long. So yeah, if you guys also like halter neck tops and like sheer tops, you guys can definitely go for this one, and I will give this a 7 out of a 10. So that was all I had for you guys today. If you guys like this video, make sure you guys like, subscribe, share and comment, and I will see you guys in my next video. Bye.